Assalamu alaikum, dear students. In the previous classes, we had completed our lesson Be Smart, and we had already completed the workshop activities in which we had seen speech preparation. And today we are going to see language studies. In language studies, you will see some important grammatical topics. So, watch it carefully and try to understand till the end. Now, the first topic of our language study here is gerund. Gerund, when the ing form of a verb is used as a noun, it is known as a gerund or a verbal noun. यानी जब क्या होता है, जब वर्ब के साथ हम ing फॉर्म यूज करते हैं और उसे नाउन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहलाता है gerund और verbal noun. For example, the fighting went on. In this sentence, the fighting is our gerund. Here we see that the ing form of the verb fight is used as a subject in the fighting went on. It does a work of a noun, यानी ये जो है ये noun का वर्क करता है, काम करता है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, gerund. Now see some examples. Gardening is an art. Here gardening is our gerund. Cooking is a science. Same as I enjoy reading poems. So here cooking and reading, these are our gerund. I like reading more than writing. Here reading and writing, these are our gerund. Rewrite the above sentences using other appropriate gerunds in place of the given here. यानी यहाँ हमने क्या करना है, जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उन एग्जाम्पल्स में जो जेरेंट्स इस्तेमाल हुए हैं उनकी जगह पर दूसरे उन सेंटेंसेस के मुताबिक या उनकी मुनासिबत से दूसरे जेरेंट्स इस्तेमाल करते हुए सेंटेंसेस फॉर्म करना है. जस्ट लाइक गार्डनिंग इज एन आर्ट, तो आप ले सकते हैं सिंगिंग इज एन आर्ट. इसी तरीके से कुकिंग इज अ साइंस, तो आप यहाँ पे दे सकते हो पेंटिंग इज अ साइंस. सेम एज आई इंजॉय रीडिंग पोएम्स, तो यहाँ पे आप कर सकते हो आई इंजॉय सिंगिंग पोएम्स. इसी तरीके से आई लाइक रीडिंग मोर देन द राइटिंग, तो यहाँ पे आप दे सकते हो आई लाइक स्पीकिंग मोर देन द reading. You may add anything. We have to change some, we can say, gerunds, and you may make some more examples like this. Now see the another term, infinitives. About infinitives we had already learned in our language studies classes. Now see here, sometimes the form of a verb in a sentence names the action but does not change according to tense, number और person. यानी कभी कभी क्या होता है, जो हमारे किसी सेंटेंस में जो वर्ब होता है तो वो इन्हें चेंज नहीं होता है, किसकी मुनासिबत से, टेंस की, और जो नंबर और पर्सन यानी ना जो हमारे पास में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं, तो नाउन के मुताबिक जो चेंज नहीं होता है वो कहलाता है, सच फॉर्म इज नोन एज अ नॉन फाइनाइट फॉर्म और एन इन्फिनेटिव. एन इन्फिनेटिव इज यूज्ड विद और विदाउट टू, यानी इसका इस्तेमाल जो है वो टू या टू के बिना भी किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, हाउ डिड पीपल फर्स्ट बिगिन टू ड्रिंक टी, यानी इस सेंटेंस में आप जो देख रहे हैं डार्क टू ड्रिंक, इट इज अवर नॉन फाइनाइट फॉर्म of the verb or infinitive. Why? Because 2 plus verb you are observing here. Sometimes it is used without to also. You may see here, can you name the beverage? Here name is our infinitive or non-finite verb. Now see, underline the infinitive in the following sentences. Here we have some examples and we have to underline to the infinitive to non-finite verb or infinitive. It was funny to read words that stood still. In this sentence, to read, it is our infinitive, so underline it. Can I read the book? In this sentence, read is our infinitive form of the verb, so underline it. Then, to be or not to be, that is the question. So here to be and not to be. So here these
to be. These two are infinitive or non-finite verbs. So underline them. Now see the first activity, which is about finite verb. Underline the verbs and choose the correct options from the brackets. Here we have two columns, and here we have to underline the verbs as per the given options in the bracket. The first statement is there in the first column. Priti even wrote about it. यहाँ पे आप देख रहे हो wrote. It is the second form of the base form right. So it is called past tense. Same as here. Priti was scornful. Here was is used for singular noun and it is singular verb. In the second sentence, today Sanjay found a new book. Here found is the second form of the find. So it is in the past tense. Same as here. This is the old kind of school. Here is our singular verb. Now see the third sentence. Rahul finds maths easy. Here finds a verb है, and it is the base form of the verb. So it is in the present tense. And here they are sportsmen. Here are is a plural verb. Now see, thus we see that verb forms show tense, number, etc. यानी जो हमारा verb form है वो हमारा tense और number को show करता है. Here the verb form changes according to the subject. यानी यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो verb form है वो subject के मुताबिक change होता है. A verb form which is decided by and changed according to the subject of the sentence is known as a finite verb. यानी हमने लैंग्वेज स्टडीज में भी इसे देखा था कि जो verb form क्या हो रहा है सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील हो रहा है बदल रहा है वो कहलाता है finite verb. For example, you are very kind if the subject you is changed to she. यानी यहाँ पे एक एग्जाम्पल में जो सब्जेक्ट हमारा you इस्तेमाल हुआ है उसकी जगह अगर आपने she इस्तेमाल करना है then the sentence will be she is very kind. यानी क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पे you था इसके हेल्पिंग वर्ब are इस्तेमाल हुआ है वही आप देख रहे हो कि she अपने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया इसलिए वर्ब में क्या चेंज हुआ है is हमने कर दिया है that is known as finite verb. Now change the following form verb form according to the change in the subject. यानी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं और उसमें हमने चेंजेस करना है. Just like I don't know, change I to she. यानी यहाँ पे I को she में चेंज करना है इसी सेंटेंस में. तो क्या बनेगा she doesn't know. क्यों हमने doesn't करना है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस की कंडीशन आप जानते हो कि अगर आपने थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट रखना है तो आप क्या करोगे वर्ब के साथ s और ये ऐड करोगे. तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट क्या रख रहे हो she जो क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर इसलिए आप क्या करोगे यहाँ पर she doesn't know. इसी तरह से my father knows. यहाँ पे क्या करना है इस सेंटेंस में my father to we यानी my father की जगह पे we इस्तेमाल करना है तो क्या बनेगा we know. अब यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर my father थर्ड पर्सन सिंगुलर था इसलिए यहाँ पे s है. अब आपका सब्जेक्ट कौन हो जा रहा है we हो जा रहा है इसलिए आप क्या करोगे we know. इसी तरह से I am following in your footsteps. यहाँ पे चेंज I to he यानी ये जो सेंटेंस हम देख रहे हैं ना I am following in your footsteps यहाँ पर जो I आप देख रहे हो इसकी जगह पर आपने क्या करना है ही का इस्तेमाल करना है. तो क्या बनेगा सेंटेंस ही इज फॉलोइंग इन योर फुटस्टेप्स. यानी यहाँ पर आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि ये जो वर्ब में चेंजेस आ रहे हैं दैट इज फाइनाइट वर्ब. नाउ अंडरलाइन एंड द जेरेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड और इन्फिनेटिव. हियर वी हैव सम सेंटेंसेस और हमने अंडरलाइन करना है एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग. सेटिंग गोल में अपीयर इजी बट इट इज क्वाइट चैलेंजिंग. यहाँ पे आप क्या देख रहे हो सेटिंग इट इज अवर जेरेंट सो वी हैव टू अंडरलाइन इट. Same as here, challenging, it is participle form of the verb. So we have to underline it and we have to write also what is it. See the next sentence. Quantifying goals provide specific ways to track progress. Here quantifying, it is gerund form of the verb or gerund. It is important to create goals that are within a current skill set or area of expertise. Here it is important to create. It is our infinitive. So we have to underline it. We need to bring down life images down to earth and plan to execute our strategies. Here we need to bring. Here to bring is our infinitive. Same as another infinitive we have to execute it. So we have to underline it also. See the last sentence finding the right footing, precisely mastering the skills and getting to the next place. All depend on how we approach and tackle the problem. Here finding it is our gerund. Same as
right footing. Right footing, we have to underline it also. Same as mastering, it is also our gerund. And the skill and getting to that, getting is also our gerund, so we have to underline. Clear? Now see the next activity. Classify the following words in the respective columns. Here we have some words and we have to classify them in the given columns. These columns are based on the parts of speech which are being learned by us. Now see the words and the columns. In the first column, that is noun, we may take the first word, that is trumpet. Same as the next word, you may take absence. Same as the next word, you may take imagination. Now in the adjective column, you may write aggression. Same as you may write natural. Then you may take important. Then expert. Then specific. Now see the next column, adverb, in which you may take the first word directly, next word exactly, next clearly, same as precisely. Now see the next column, that is about verb. The first word you may take tackle, same as the next word execute. Then you may take achieve, then create. Now see the next column, in which we have to write pronouns, in which the first one we, then you may take the next one it. Same as in the column of preposition, you may write of, then from. Then in the next column, that is about conjunction, in which you may write if, then, and, same as but. And the last column is about interjection, and you may write in which oh. Changing word class. Sometimes the word class of a word changes without adding any prefix or suffix. यानी कभी कभी क्या होता है, any prefix or suffix को add किए बिना भी हम word class change कर सकते हैं. For example, run is used as a verb. So verb is its word class in I can run faster than him. यानी यहाँ पे run as a verb इस्तेमाल हुआ है, word class इसका क्या है, verb है. But when run is used as a noun, its word class changes. For example, India has to score 10 more runs to win the match. यहाँ पे जो runs है वो noun के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, यानी यहाँ पे इसका word class noun है. This is called a change of word class. यानी इसको हम change of word class कहते हैं. Look at the following example. Change of word class from verb to noun. यानी I doubt if I can write as fast as you can. यहाँ पे doubt जो है verb के तौर पे इस्तेमाल हुआ है. I have a doubt about this topic. यहाँ पे जो डाउट इस्तेमाल हुआ है वो एज अ नाउन हुआ है. सिमिलरली लाफ, वॉक, कैच, थ्रो, टर्न, इन वर्ड्स को हम एज अ नाउन और एज अ वर्ब ले सकते हैं. चेंज ऑफ वर्ड क्लास फ्रॉम नाउन टू वर्ब. यहाँ पे रिमूव द पोटैटो पील्स, यहाँ पे पील्स जो है वो नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है. इसी तरह से पील द पोटैटो, यहाँ पे जो पील वर्ड इस्तेमाल हुआ है एज अ वर्ब हुआ है. शी वर्क्स एज अ नर्स, यहाँ पे नर्स नाउन के तौर पे. यू हैव टू नर्स अ पेशेंट टिल ही शी रिकवर्स, यहाँ पे नर्स वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है.